we understood the formula, the application of that formula for the various cross sections. Let us quickly recap the things what we have studied, and let's go further. So as you can see in this particular diagram, which is visible to you, here the formula for calculating shear stress at any particular layer is given by this particular formula, SA y bar upon IB. What are the terms involved in it that are very, very important for us to apply this or any of the cross sections. So what is tau is the shear stress at any given layer. A is the area of the section above or below the layer, that is hatched area. You can see if I want to find out the shear stress at layer AB, I'll have to select the area which is above that layer AB or below that layer AB. Okay, you can take any one. We generally go for the smaller area because it involves lesser calculation. But even if you go for the bigger area, which is below the layer AB, still you will get the same answer. The I is the moment of inertia of the entire cross section about neutral axis. This we have been doing in the bending stress as well. B is the width of that layer. So AB ka jo bhi width hoga, that is B. And Y bar is the location of centroid of the hatched area, or whatever the area you are considering in this, whatever the centroid of that area is there, uska location from the neutral axis. Okay, so these are the terms which are very important, required for calculation. So now we have used this particular formula for simple rectangular cross section, and we calculated the shear stress at central layer, which is at neutral axis and which is going to be maximum. So we use that, we took this layer AB. Layer AB ka, if I take the area below or area above, it is same because central layer we have taken. So if I take area above, the area of that we have calculated. So SA y bar upon IB, area above is given by this formula, B into D by 2. The neutral axis ka inertia of the cross section about neutral axis is BD cube by 12, that we already know. The width is itself B, so that we have kept as B. And y bar, the location of centroid of this particular is at D by 4 distance, so therefore y bar is D by 4. So when we substitute all these values to our formula, here we get the maximum shear stress, which is at the central layer, which is of 3 by 2 S by BD. But if you take the average shear stress, it is shear force upon area of cross section, then it gives me average shear stress. And we found that in rectangular cross section, the average and the maximum, there is a relation between them. The maximum shear stress is 1.5 times the average shear stress, or 50% extra, right? So 1.5 times the average shear stress. So this is what we have solved for rectangular section. The second section which we solved for is the circular section. For circular section also, we have done the same thing. We have taken the diametrical central layer. At that layer, what was the area above the layer or below the layer is a half the circle. So that is pi by 8 d square. Then inertia pi by 64 d raised to 4. The width of that layer is nothing but the diameter here, and then the y bar, the centroid of this half circle is 4r by 3 pi distance. So that 4r by 3 pi we have converted into terms of diameter, and then again we have substituted everything in this particular formula, right? So once we know all these substitutions, we got some relation, and if you replace it by the average shear stress value, then we get that the maximum shear stress and average shear stress, they have a relation of 4 by 3, that is 33% extra. Okay, so tau max is 4 by 3 times the average shear stress. So that also we solved. Then we tried for the triangular section. Triangular section we solved it for the neutral axis, and we solved it for at a distance y by 2. At a distance, you can see h by 2 from the base. Now we will solve again for triangular section today for the maximum. Now here we understood that कि ये जो shear stress है triangular section के लिए, उसका एवरेज वैल्यू इज दिस. उसका अगर मैं लेयर न्यूट्रल एक्सिस पे लेता हूँ, तो न्यूट्रल एक्सिस पे द वैल्यू इज 2. यू कैन सी दिस इज द वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पे 8s by 3bh, but we are not sure ki whether it is going to be maximum or not. How to calculate the maximum shear stress value in triangular section? So that is what we are going to do it, and that will be somewhat revision kind of thing what we have done for triangular section. Okay, so let us start. Okay, so as you can see, what I can do here is, let's say we have a triangle. Okay, so triangle, wait, I'll draw a bigger triangle comparatively.
Okay, now we have a triangle. Let us get some dimensions for the triangle. Let's say the base size is B, or rather instead of writing B, let us write down capital B, because ultimately we are going to use this for this one. And the height of this particular triangle is, let's say, capital H. Okay. Now we know the neutral axis. The neutral axis, the centroid will lie somewhere at a distance of h by 3. So let us draw the neutral axis. Here this will be the centroid, and an axis passing through centroid will be like this. Okay, so this will be my neutral axis at a distance of h by 3, right? Now consider any general layer for about at which I want to find out the shear stress value. Okay, so let us consider any general layer. We are considering a layer AB over here. Okay, a layer AB. Any general layer we have considered. Now, how to understand what will be the distance? So let us assume that the distance of this layer from the centroid is, or else from the base we can consider. The distance hai. Let us assume that it is at a distance of y from the base. Okay, so if I consider this as my layer at which I want to find out the shear stress, so according to that formula, tau equal to SA y bar upon IB, I want to take the area below or above that layer. So if I take area below the layer, it will be a trapezoid, and for calculating for trapezoid, it becomes quite difficult as compared to the triangle. So let us consider the area above. So this is the area which I am going to hatch. Okay, now how I'll have to find out the area of this layer, then I'll have to find out the center of this layer from the neutral axis, and so on, right? So let us now find out area first. But before finding out the area, if I draw the half circles, half triangles of this for a construction purpose, so let's say I'll be getting like this. Okay, assume that this distance is x and this is also x. So this will be x, this will be b by 2. Now you know that this distance I have assumed as y. So how much will be this distance? This will be h minus y, because the total height was h. So therefore this will be h minus y. Now these triangles are similar. Let's say this is triangle 1 and triangle 2. Triangle 2 is the entire triangle and triangle 1 is smaller. So by similar triangle method, what I can write down? By similar triangle method, I can write down x upon b by 2 equal to h minus y upon the total height as h. So I will be getting x as x will be equal to that b by 2 we will be multiplying over there. So here it will be, if I divide by h, it is 1 minus y by h into b by 2. This is your x. Okay, but if I want to find out the, now I'll let us try to solve for the requirements. Okay, so what will be the area of that hat section? The area will be half into base. Base is itself 2x into height. Height is h minus y. So if I substitute, 2 gets cancelled. What is x is? What is x is 1 minus y by h into b by 2 into h minus y. Okay, or else we can write down, अगर इसको मैं simplify नहीं करता, rather I can write down this as h minus y upon h into b by 2. Okay, so if I write down that way, here it can be written as h minus 2 square, h minus y square. So I can write down this is h minus y upon h into b by 2. So here it becomes b by 2h into h minus y the whole square. This is my area of that layer. Now what is the width of that layer? So the width of that layer is nothing but 2x, which is nothing but b into
h minus y upon h, right? Because 2 gets cancelled. Now what else I require? The area about neutral axis. So inertia of the entire triangle about neutral axis, we already know it is 1 by 36 b h cube. BH cube. That is everybody we know. So already we know. So once I know inertia, once I know B, now what is left out is only y bar. Y bar is the location of the centroid of this hatched area. So let me write down the centroid of that area. So here, let us assume that the centroid is somewhere over here. Centroid, sorry, it should be white in nature. Centroid will be somewhere over here. ओके तो वो सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस, इट विल बी, इसका जो हाइट है, दैट हाइट वी नो इट वाज h minus y, so it will be h minus y by 3, right? Centroid of that triangle h minus y by 3, but I don't want that centroid from the base, I want centroid from the neutral axis. Now this distance is how much? So if you know, the total was y and this was h minus y by 3, we want this particular distance. ठीक है, टोटल हमें ये हमारा डिस्टेंस जो है वो है मेरा y bar. So how much will be my y bar? Anybody can tell me? How much will be y bar? 2h by 3 minus 2 by 3 of h minus y. Yeah, very good. So देखो, we know that this distance, ये total जो distance है, ठीक है, either you can do that way or else you can calculate from base. ठीक है, base से हमें ये पता है कि height y है, उसमें से हमें ये माइनस करना पड़ेगा. So either way it can be done. We know that कि जैसे अभी इसने बोला कि ये height हमें पता है, this is 2h by 3. वो 2h by 3 से अगर मैं ऊपर वाला इतना माइनस करता हूँ, that will be 2 times h minus y by 3, right? So I can write down 2 by 3 h minus 2 by 3 h minus y. Is it so? Fine. So what I can write down, common क्या ले सकते हैं हम लोग? 2 by 3 common, h minus h plus y, right? So h gets cancelled and we will get 2 by 3 times y. Have you understood this? Is it correct? Just check it. I may do some mistake. So from here to here it is 2h by 3. उसमें से हमने ये वाला माइनस किया. We know that this is h minus y by 3, right? तो उसका जो ऊपर का एंड होगा apex, वहाँ से 2h by 3 होगा, and that we have subtracted. So we will get this distance as my y bar, that is 2 by 3 y. So I know all these parameters. So now can I substitute this in my calculation to calculate the shear stress, right? So what is my shear stress का formula? The shear stress is nothing but S A y bar upon I neutral axis into B, right? So let us substitute. S is as it is, area is B by 2h into h minus y the whole square, area into y bar is 2 by 3 y upon what is neutral axis का inertia? It is 1 by 36 b h cube into what is b? That is b into h minus y upon h. Now see here how many things we can cancel out and what is going to left. So carefully we need to cancel out this because we should not miss something. So here this b and this b gets cancelled, right? Here this h gets cancelled, 2 and 2 gets cancelled, h minus y square and h minus y gets cancelled, right? If you divide by 3, here it will be 12. Now what is left? So can you write down what is left? So it is s into h minus y into y, right? बाकी कुछ भी नहीं बचा न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा है? तो डिनोमिनेटर में बचा है ये सब कुछ कैंसिल, बी एच क्यूब बचा है और ये 12. ये 12 तो ऊपर जाएगा तो ये 12 ऊपर गया, बचा क्या है यहाँ पे? बी एच क्यूब.
Have you understood this? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What we are finding out? We are finding out for maximum shear stress, right? Now we know that for tau to be maximum, what is the mathematical condition we should know? For tau to be maximum, this d tau by dy, the variation with respect to y, the first derivative must be 0, right? Now, first derivative must be 0. एक minute, erase करता हूँ. Yeah. So if my first derivative is 0, let us try to solve for first derivative. So dy, once again I'm writing here, D tau by dy. d tau by dy is 0. So if I differentiate this with respect to y, is that 12s and bh cube is constant, so I can write down d H minus y plus by dy is equal to H 12s minus by bh cube. Okay, it's constant into derivative of this. Now this can be also written as 12s by bh cube ऐसे ही रख के कि y को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया होता तो hy minus y square होता, right? Now to differentiate this, it will be h minus 2y, right, with respect to y. Correct है? Now this is 0, so therefore 0 is equal to h minus 2y. So therefore I will get 2y is equal to h, and I will get y is equal to h by 2. So I am going to get the maximum value of shear stress at y equal to h by 2. So what will be the my maximum value? So my tau maximum will be, you have to substitute y ka value as h by 2. So what is your formula? Your formula is 12s upon bh cube into h minus h by 2 into h by 2 upon bh cube. That's it. So h minus h by 2 is h by 2. H by 2 into h by 2 becomes h by 4. H square by 4. So I will get 12s by bh cube into h square by 4. So if you simplify, h square and this h gets cancelled. 4 3s are. So I will get this as 3s by bh, right? 3s by bh. Now, if you know the average shear stress value, what was average shear stress value? Average क्या होगा? It is total shear stress upon the area. Area is half into B into H. तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 S by BH. Is it not? So average value is 2 times S by BH, right? So what is the relation between maximum and average value? What is the relation? Again, it is 3 by 2 times, right? ना S by 2 के बदले क्या लिख सकता हूँ? Tau average. 1.5 average value. Right ना? हाँ. तो यहाँ पे हमें एक ही ये डेरिवेशन हमने इसके लिए किया है. नाउ यू विल सी दैट बोलोगे कि ट्रायंगल के लिए हमने 3 बार क्यों किया. तो देखो ट्रायंगल के लिए जब मैंने पहला मैंने सबसे पहले किया रेक्टेंगल के लिए, which is at neutral axis, we found that it is maximum at neutral axis. Then for circle also we found that it is maximum at neutral axis. Okay, but for triangle it is not maximum at the neutral axis. It is not maximum for the neutral axis. It is maximum at a distance h by 2 from the base. ठीक है. तो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए अगर मैं इसका ये बनाता हूँ shear stress distribution बनाता हूँ, तो I will draw the triangular section का here. Suppose I have a if I have a triangle like this, okay, if this is B and if this is H, तो ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस का सेंट्रॉइड है. ठीक है. So shear stress distribution will be maximum, will not be maximum at the neutral axis. It will be maximum at a distance h by 2, and neutral axis is at a distance h by 3. Are you understanding it? Tau is maximum at some other layer in case of triangular section. In case of triangular section. Have you understood this? So sometimes Yes, they'll ask you in exam, show that the shear stress is maximum for maximum at half of the height, at a midpoint of the height,
for triangular section. So you have to derive that everything and you have to draw these shear stress distribution. Okay. So in this way we can derive for any of the cross section which is given. Now let us go for some numerical solving. How this numericals can be asked on this. Okay. So let us go for the first numerical. So determine the maximum shear stress for the web of a beam having T-shaped cross section. Okay. As shown in figure, I have not drawn the figure. The B is given as 40 mm, the T thickness is 10 mm, height is 80 mm, and H1 height is 70 mm, and shear force is given. Shear force ka the value is given. So we know the shear force is denoted by S. The value is 10,000 Newton. That is given. So you have to just draw the T section first. So as it is given for T section, we'll be drawing it for T section. Sir, this question is already done. It's done. Yes, sir. Last time यही किया था question. I'm not sure. I don't have this. Okay, fine. If it is done, we can go for the next one. So now it is for C section. Okay. So a beam of channel section as 120 and 60 mm cross section has a uniform thickness of 15 mm that is given. Draw the shear distribution subjected to shearing force of 100 kilonewton. So this is my value of S. Okay. Now as this particular cross section is symmetric, there is no doubt we can easily locate the centroid. Where the centroid will be? Centroid will be somewhere at the middle at a distance of 60 from base as well as top. So let us draw the neutral axis passing through centroid. So this is our neutral axis. Okay. Now once you know the neutral axis, what we can do here is अभी कौन से layers पे हमें shear stress find करना है. At which sections I need to find out the shear stress. That is very important. जैसे मैंने तुम्हें बताया था. तो सबसे पहले हम लोग neutral layer पे find करेंगे. तो वो हमारा हो गया maximum, सबसे maximum. So let us take this as my section 1-1. Then I will be finding out at this particular section, that is section 2-2. Then I will take the bigger layer up to end of this, that is my section 3-3. And then top layer तो already 0 होता है, we already know. Bottom layer is also 0. But if you take, तो ये भी नीचे वाले layers अगर तुमने लिए तो वो symmetric है. This section is symmetric, so no need to solve for the entire section. We can solve only half of the half of the section, and the rest part is done. Sorry. Okay. So how to start with this? Now let us take for section 1-1. Or before that, whatever the things we require that we can calculate is the inertia of this entire C section about neutral axis. So let us talk about inertia. Is there anyone who can tell me how to calculate inertia, or should I nominate? Yes. No one? All are there or not? चालू करके भाग गए. Okay, I should call out. Mechanical E19. Bhagyashri is there. No. Fine. Then 26 Vansh. Make A. Are you there? No. Fine, I'll have to note down. Fine. 19 and 26 are not there. '29 Ambesh Kumar Jha.
Okay, no. So this seems only few people are responsive. 39, Shashi Khatri. Yes, sir. Okay. Can you tell me how to go for inertia? Yes, sir. We can divide this C into three parts. That is the Yes. central beam and the Okay, two let me flange. do it for you. Okay, we have taken this in three parts. Okay, sir. 1, 2, Uh, and 3. Yes. so it will be 12 into 12, 1 by 12 into 15 into 90 cube. 15 into 90 cube 90. Where this 90 comes from? height. So you're talking for which section? First or second or third? Middle. Middle one. Okay, fine. Middle. Okay. 90. Okay. 90. Yes. Cube 15 into 90 cube plus 12 into plus 1 by 12. so make it twice. Make it twice for the two flanges. Okay. At the end, I'll write twice. Okay, sir. Ah, 12 1 by 12 into 60 into 15 cube okay. plus Then, acha, plus. plus 60 into 15 Yes. into 52.5 whole square. How much? 52.5 square. 52.5 square. How you got 52.5? Um, we take the distance between uh, the central line and the dist- and the center of the flange. Okay. Okay. Good. 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 How much will be the answer for this? Anyone else? Let me calculate. Yeah, others can also answer. It's not that key only. 59.06. Yes. 59.06. 50. 9.06. 10 0, raised to 0. 5. 0606. 0, 2. 6. 6. Okay. 59.06 into 10 raised to 5. 5 mm raised to 4. Is it correct? Everybody should have calculator in their hand. At least they should calculate with me because you are not writing anything. Yes, sir, it is correct. Okay. 5.9 into 10 to the power 5. Good. Okay. Good. Good. Now we will go for calculating the inertia for every section. Okay. Let's start from here. Let's say tau at 1 section. 1 सेक्शन लिया तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस पे हो गया. तो न्यूट्रल एक्सिस पे अगर हो गया तो वो सेक्शन के ऊपर वाला जो पार्ट है मैं वापस से ड्रॉ करूंगा. ये ऐसे पार्ट बचता है ना. राइट. तो अभी ये टी सेक्शन बच गया मेरे लिए. राइट ना. दिस इज 15. हाउ मच इज दिस? Sir, L over. How much is this? अच्छा सॉरी टी नहीं. सॉरी 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 मैं क्या बनाया. वेट वेट अ मिनट. टी नहीं आधा एल बचेगा. वो मैंने गलत बनाया था. ऐसे बचेगा. राइट. नाउ करेक्ट. Yes, sir. Yes. 15. हाँ ओके. नाउ हाउ विल वी नीड. अभी ये अगर एरिया मेरा हैच हो जाता है सेक्शन 1 लेता हूँ तो ये एरिया हैच हो जाएगा. तो ये पर्टिकुलर इसके लिए मुझे इसका सेंट्रॉइड भी फाइंड करना है न्यूट्रल एक्सिस से और सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा. तो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस सेक्शन. एरिया कितना हो जाएगा इस सेक्शन का. एरिया के लिए हमें ऐसा कर सकते हैं हम लोग. राइट. या फिर कैसे भी तुम्हें अगर यहाँ से डिवाइड करना है तो यू कैन डिवाइड इट फ्रॉम हियर. ओके. बिकॉज ये 15 गया 60 में से तो ये बचता है 45 ना. So you can find out area as 45 multiplied by 15
plus 60 multiplied by 15, right now? How much is this area? 1575. Yes. 1575. Yes. Sir, 1575. 1575. 75. 1575. Okay, fine. Now tell me, once you know inertia, we can find out the B. Section 11 का जो width है, वो तो 15 mm है. That is already known to us. So 15 mm we already know. Okay, तो वो तो हो गया. What next we require is the y bar for this section. Right ना? Neutral axis से y bar. तो y bar कैसे find करेंगे? तो ये section 1 लेते हैं, ये section 2 लेते हैं. इसका y bar कैसे find करेंगे? Formula is a1y1 plus a2y2 upon a1 plus a2. Now what is a1? It is 45 into 15 into उसका y कहाँ पे रहेगा? Yes, 22.5. 22.5. Very good. Plus a2 is 16 multiplied by 15 into what will be the y bar for that one? It is 45 plus 7.5. 52.5. 52.5. Yes, very good. 52.5 and divide में पूरा a1 plus a2 वो तो हमें पता है 1575 होगा. How much is this? 39.64. 3.44. How much? 39.64. 39.64. ओके, करेक्ट है, सबको पता चला ये. Yes, sir. y बार अभी क्या कैलकुलेट करोगे फिर? मैक्सिमम shear stress ना. We know that it is going to be maximum at neutral axis. तो neutral axis पे कितना वैल्यू आएगा वो फाइंड करते हैं. So it is S A y bar upon neutral axis का inertia into B. Let us substitute the values. S how much? 100 into 10 raised to 3. Area how much? 1575 into what is y bar? 39.64. Let 39.64 upon what is inertia? 59.06 into 10 raised to 5 into what is your B width is 15 mm. So give me the answer in MPa. 7.04. Yes. कितना? 7.04. 04. Fine. Now what next? Yes. The next part is to find out for section 22 and section 33, right? So let us write down here for tau at 22 section. अभी देखो tau at 22 section अगर लिया मैंने तो 22 section के बाद ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ. 22 section है इधर, बट सेक्शन 22 इतना ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, राइट? तो हमें विड्थ B जो है वो इतना ही लेना पड़ेगा. B कितना हो जाएगा फिर मेरे केस में? ओनली 15 mm, बराबर ना? और एरिया तो पूरा है चौड़ा, तो एरिया कितना होगा? कितना होगा? 15 multiplied by 60, राइट? दैट इज 900 mm स्क्वायर. ठीक है, B पता चला, A पता चला, y बार कितना होगा? हाउ मच फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस? 52.5 ना, बराबर कि नहीं? Yes, sir. Sir, 15 to 60. 60. बोलो. So can you calculate tau at section 22? Sir, I about neutral axis की value भी शायद से गलत है. हाँ सर 49.96 आएगा into 10 raised to 5. मैं पहले ही बोलता हुआ तुम लोग ठीक से बताओ, मैं तो कैलकुलेट करता नहीं हूँ. 49.96 49.96 into 10 raised to 5. तो इधर कितना आएगा फिर? एक सेकंड. यस.
सर 8.33 है. कितना? 8.33. 3. Yes. That's it. Yes, 8.331. 83.31. अरे तुम बोल रहे 8.3, एक बोल रहे 83, बट ठीक से बताओ. Sir, 83. 83.31. हाँ, 83.31. 83.31. ओके ओके. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि everybody should sit with the calci and should have a practice of typing on the calci. Otherwise तुमको एग्जाम में वो आंसर रॉन्ग ही मिलेगा. ठीक है. This ISA exam was very easy because I know that the questions were solved examples. Okay, and people have done inertia जो हमने wrong लिखा था स्लाइड पे, वही लोगों ने वही छापा है. बहुत ही कम लोग ऐसे मुझे मिले जो उसने inertia करेक्ट करके खुद कैलकुलेट करके लिखा है. So I know how people are reacting. So everybody, I am keeping it in the notice. मेरे पास पूरा सब कुछ है तुम्हारा, तुम कैसे behave करते हो, क्या कर रहे हो. So don't think, don't have an impression that कि you are behind the curtain तो मुझे दिखेंगे नहीं. दिख नहीं रहे लेकिन पता चल रहा है. Okay, because ऐसे ही सेम गलती था, किसी ने inertia wrong लिखा था. Many few, Love Jha must be knowing it because Love Jha has pointed it out. Are you there, Love? Yes, sir. Yes, correct है कि नहीं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर. सब लोगों ने वही लिखा है, रॉन्ग वाला inertia अपने हाँ, आंसर्स sir. में. So this is how we are solving for exams. So I have taken some corrective action for that. You'll come to know in the upcoming exams. But ठीक है. Okay, so that I'm expecting that you don't blindly follow this. ठीक है. I may be wrong, you may be wrong somewhere. So don't believe on yourself and इसके लिए कैल्सी लेके बैठो. वो बेड पे ऐसे उल्टा रह के फॉर्म नहीं पढ़ सकते. ठीक है. Okay. I'm giving you minimum burden. I'm not asking you to write down these things. Otherwise, if you have अगर offline classes होता तो you would have to write down everything. Okay? वो time पे कुछ ये नहीं होता. But ठीक है. Don't take extra advantage of the situation. Be in a good position that you should be able to calculate at the time of exam. Okay, next. Tell me SA y bar upon IB. हाँ, so अभी ये substitute करेंगे फटाफट से. मुझे बताओ S का वैल्यू तो 10⁵ लिखता हूँ डायरेक्टली अभी मैं. 100 into 10⁵ is 10⁵. Area is 900. The y bar is 52.5 upon what is my neutral axis का inertia 49.96 into 10⁵. And what is my width is 15 mm. Okay. So how much will be the answer? Yes. 63.05. 63.05 MPa. Right है. हाँ. Now मुझे बताओ tau at section 33 कितना होगा? सेम बनाएंगे हम लोग, बट ये केस में पूरा हम लोग लेयर कंसीडर करेंगे ना. सेक्शन 33 मतलब पूरा लेयर आएगा. तो यहाँ पे विड्थ खाली चेंज हो जाएगा. विड्थ कितना हो जाएगा अभी? 60 mm. राइट. बाकी सब कुछ सेम रहेगा फॉर्मूला में. टाउ 33 का जो फॉर्मूला है वो सब कुछ सेम. SA y bar अपॉन IB में सब कुछ सेम. S का वैल्यू भी 10⁵. एरिया 900. एवरीथिंग इज सेम, ओनली द विड्थ विल चेंज. Y bar is also 52.5. 49.96 into 10⁵ into what is B is 60. हाँ, कितना आएगा? 15.76. 15.76. हाँ, MPa. Now can you draw the shear stress distribution for this? How will you draw the shear stress distribution for this? तो देखो मैं यहाँ पे अभी शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर रहा हूँ. ये मेरा जीरो लाइन है. आई नो इट इज जीरो एट दिस टू टॉप एंड बॉटम. ठीक है. सेक्शन 33 पे कितना वैल्यू है? एक वैल्यू है 15.76 और दूसरा वैल्यू है 63.05. Then the maximum value is how much? I am having as 83.31. Then I have again 63. I have again 15 and then again 0. So you know that the variation is parabolic. So this is parabola, then straight vertical line, then again a parabola, then a straight this one, and then again this. Getting it? So this is the bending stress. Shear stress distribution across the cross section. Have you understood this? Yes or no? Yes, sir. Okay. So let's go further.
Yeah. So now we have another section, question 4.4. A beam of a square X section subjected to a shear force. Okay, square X section subjected to a shear force so placed that one of its diagonal is horizontal. मतलब स्क्वायर सेक्शन ठीक से ऐसे नहीं रखा है, उसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल रखा है, मतलब डायमंड शेप में रखा है. ओके, स्केच द shear stress distribution for that. Sketch the shear stress distribution for that. कैसे करेंगे? Any idea? अभी हमने इतना कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, एटलीस्ट यू शुड नो. डायग्राम तो उसका मैं बना देता हूँ. सॉरी, थोड़ा वापस बनाते. ओके, सी हियर the horizontal axis and vertical. Okay, now we have a cross section like this. Okay, this is a diamond section. The axis is diagonal is horizontal. You can see the square side बोला है, तो let us take the side of this is A. This is also A and A. Now you have to draw the shear stress distribution for this particular section. Where will be the neutral axis? This itself will be the neutral axis, is it not? Right now, because the centroid is going to be over here only, so therefore this is my neutral axis. I want to draw the shear stress distribution. Okay, so anybody can guide me how to do it? Yes. Now here is the सर. okay. सर एक डाउट था सर. सर इस क्वेश्चन में बोले बीम ऑफ स्क्वायर एक्स सेक्शन सर, तो बट वो एक्स सेक्शन कौन सा था सर, वो समझा नहीं. स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक्शन है ना, देखो ना सबका साइड सेम है. ओके सर. एक्स सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन. एक्स क्रॉस सेक्शन को कभी कभी एक्स सेक्शन भी लिखते हैं. एक्स का बाकी कोई मीनिंग नहीं. एक्स इज क्रॉस सेक्शन. एक्स मतलब क्या है, दिखाना क्रॉस, वो साइन ऐसा लिखते हैं शॉर्ट वर्ड में. ओके ओके सर. ओके सर. यस सर. एक्स मतलब क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन. हाँ, तो अभी कैसे करेंगे? हाउ वी शुड स्टार्ट विद एंड वेयर, हाउ टू गो? सर इसको दो ट्रायंगल में स्प्लिट करके फिर दोनों का मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा. वो न्यूट्रल एक्सिस के हम एक का निकालेंगे, फिर मिरर करके अपर ट्रायंगल का निकाल के मिरर. कैन आई डू इट विद ट्रायंगल? नो. व्हाई? बिकॉज मुझे कोई भी लेयर में कहीं पे भी लूं, मुझे इनर्शिया पूरा सेक्शन का लेना पड़ता है. तो ट्रायंगल लिया तो स्क्वायर का इनर्शिया नहीं ले सकता ना. अच्छा चलो, सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. टेल मी इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन, ये स्क्वायर सेक्शन, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. पहला चीज तो सबसे पहला वही है कि मुझे कुछ भी करूं मैं, इनर्शिया तो लगेगा. हाउ विल कैलकुलेट इनर्शिया अबाउट दिस न्यूट्रल एक्सिस? यस, we have been doing it inertia from since long, 4 to 5 weeks. So now I want any one of you to comment on this. How, what will be the inertia? उसका formula मतलब क्या आएगा, expression क्या आएगा? Forget about shear stress. We'll do it afterwards. Before that, what is inertia? Yes. Anybody from A as well as B section? Quickly. Take your time. We have enough time. No one? किसी को भी नहीं सूझ रहा है? Any idea at least? Sir, ml square by 12. ml Square by 12. मास तो है ही नहीं ना यहाँ पे, हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं. तो इस हिसाब से तो उसका डायगोनल √2 हो जाएगा ना दोनों.
डायगोनल तो √2a होगा. ओके, दैट इज करेक्ट. तो उसी को मतलब bh³ होता है अपॉन 12, तो डायगोनल को ही रेज टू 4 करके डिवाइड बाय 12. ओके, न्यूट्रल एक्सिस से हो जाएगा वही शायद. सर इसमें सर ऐसा सर इसमें दो ट्रायंगल कंसीडर करके सर जो ट्रायंगल का हम लोग निकालते हैं आई एक्स नॉर्मली वैसे निकाल के, बट उसको फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग चेंज करके आगे मतलब वैसा कर सकते हैं. दो ट्रायंगल बना के बाद में उसको इनटू 2 करके कर सकते हैं. हाँ चलेगा. कुछ फिगर आउट करो और मुझे बताओ कितना इनर्शिया आएगा. अच्छा सर, जैसे अगर जो ये पूरा शेप है वो हर साइड से सिमेट्रिक है, मतलब फ्रॉम एक्स एक्सिस आल्सो फ्रॉम वाई एक्सिस आल्सो, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस पे ही तो सिमिलर ही होगा ना. एक सेकंड से मैं बताता हूँ. सिमेट्रिक है वो दिख रहा है ना. इट्स quite visible. It is symmetric about x and y both. That is the reason we have studied the inertia principles, the how to share the inertia for parallel axis theorem, then perpendicular axis theorem. Perpendicular की जरूरत ही नहीं है. Parallel axis theorem you can use. You can. वही सर वो दो ट्रायंगल कंसीडर करके इनटू 2 करके हो जाना चाहिए. तो बताओ मुझे कितना आएगा. Just scribble it. Hardly 1 minute. तो a raised to 4 upon 3 आएगा क्या? कितना? a raised to 4 upon 3. a raised to 4 upon 3. नहीं, थोड़ा स्ट्रांग है. सर a raised to 4 upon 12 आएगा. Okay. How do you calculate upon it? 12. Can you tell me how you have calculated? Anybody? कैसे कैलकुलेट किया? राइट कौन सा? सर वही ट्रायंगल के फॉर्मूला से ही करा सर. चलेगा. ट्रायंगल करके डबल कर देंगे तो भी हो जाता है इतना. हाँ सर. हाँ सर वही ट्रायंगल वाले से डबल. डू इट. थोड़ा कर लेते हैं. तो और अज्यूम क्या करते हैं. चलो ये अभी मुझे बताओ, ये जो डायगोनल है अज्यूम करते हैं कि ये डायगोनल है ना. डायगोनल को हम लोग अज्यूम करेंगे वो डी है. तो डायगोनल डी कितना होगा? तुम्हें पता है कि डायगोनल डी होगा √2 टाइम्स ए. बराबर ना. √2 टाइम्स ए होता है. इतना तो सबको पता है. यस सर. हाँ सर. चलो डायगोनल मिल गया. तो अभी मैं अगर ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल का बेस कितना है? डायगोनल. और ट्रायंगल का हाइट कितना है? a/√2. डायगोनल बाय 2. ओके. a/√2. मुझे बताओ द इनर्शिया और न्यूट्रल एक्सिस विल बी 2 टाइम्स ट्रायंगल. बट ट्रायंगल का इनर्शिया तुम कहाँ पे फाइंड कर रहे हो? बेस पे, नॉट ऑन दी न्यूट्रल. मतलब ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इधर आता है राइट ना. तुम यहाँ पे नहीं फाइंड कर रहे हो, तुम बेस पे फाइंड कर रहे हो. तो अगर इधर फाइंड करते तो 1/36 आता है, एंड बेस पे फाइंड करते तो 1/12 आता है. दिस इज यू शुड नो. तो ट्रायंगल का इनर्शिया अबाउट बेस is 1/12 into base is also base is nothing but the diagonal, and height is diagonal by 2 का cube. Are you understanding this? bh cube by 12 होता है ना. b is nothing but d and h is nothing but d by 2. बराबर. अभी इसको सबको a में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 को ऐसे ही रखता हूँ. ये 1/12 into डायमीटर को मैं लिखता हूँ √2a. सॉरी डायमीटर डायगोनल को लिखता हूँ √2a, एंड ये हो जाएगा √2a by 2 का क्यूब. बताओ ये कितना आएगा? ये 1/6 हो गया बाहर. √2a as it is. This will be 2√2a cube, right ना? Upon 8. Is it not? तो देखो 2√2 ये हो गया 4 से डिवाइड किया तो ये 12. कितना हो गया? a raised to 4/12. a raised to 4/12. So somebody was correct who was saying a raised to 4/12. अभी मुझे पता नहीं कौन बोल रहा था, but ठीक है. Good. You can congratulate yourself. Okay. So now next, what is the next step? Yes. What is the next step we should do? Think of, because this is how the mechanical engineering goes. You should know the concept and you should try to apply. हर बार क्रॉस सेक्शन हमारा स्टैंडर्ड नहीं होगा. जब तुम ये सब रियल प्रैक्टिस में कभी यूज करोगे फॉर कैलकुलेटिंग shear stress across the cross section of beam and everything, so there won't be any standard section. The standard section is just to understand how to apply.
but once you know how to apply, you should think of कि what is the case and how I should apply it. तो बताओ अभी आगे क्या करेंगे? Yes. Anyone? तो जैसे मैंने ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए किया था, क्या किया था? आई हैव टेकन वन लेयर, एक कोई भी जनरल लेयर लेता हूँ मैं, जो एट अ डिस्टेंस क्या होगा? y कहीं से भी y डिस्टेंस कहीं से भी लो, तुम बेस से लो, कहीं से भी लो, एंड देन उसके ऊपर इनर्शिया, उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस कितना आता है वो फाइंड करो. एंड तुम्हें पता है कि मैक्सिमम फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 करना किया पड़ेगा. हुआ है पहले, वो नया चीज नहीं कर रहे हम लोग. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अभी क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेयर ले लेते हैं. लिया लेयर ए बी. हाँ, अभी ये लेयर लिया, कितने डिस्टेंस पे लिया? तो अज्यूम करते हैं कि ऊपर से y डिस्टेंस पे लिया. कितना? यहाँ से हमने लिया y. पता नहीं, मैंने ऐसे जनरली कोई भी डिस्टेंस लिया. तो देखो, अगर ये ऊपर से तुम y डिस्टेंस पे लेते हो तो ये कितना होगा? हाउ मच विल बी दिस AB का AB कितना होगा? यस, एनी आइडिया? ये भी y होगा और ये भी y होगा. डू यू एग्री दिस? यस सुनो, बाय ज्योमेट्री अगर ये सब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से अगर तुम इतना y डिस्टेंस पे नीचे अंदर आते हो, इधर से y by भी 2 सर. हाँ मतलब 2y. हाँ, वो y लिखा ना मैंने दोनों साइड, बराबर है ना अभी? ठीक है, हाँ सर. मैंने y ऐसे लिख दिया. तो वो तुम कुछ भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू, बिकॉज अल्टीमेटली y क्या है वो तुम्हें पता है. ठीक है, वो डेरिवेशन करने के बाद वैसे भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं. तो लेट्स से अभी ये मैंने लिया, तो एरिया मुझे अगर यहाँ पे न्यूट्रल ये करना है तो एरिया हैच ये करना पड़ेगा, और न्यूट्रल एक्सिस मेरा यहाँ पे. ठीक है, सो अभी लेट्स स्टार्ट. फॉर सेक्शन और फॉर लेयर ए बी, फॉर लेयर ए बी, लेट्स से व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट सेक्शन. जो भी हैच एरिया लिया मैंने, उसका एरिया क्या होगा? हाफ इनटू बेस इज 2y, हाइट इज y. समझा? मैंने y लिया क्यों? तो इजी पड़ता है ऐसे कैलकुलेट करने के लिए. ये कैंसिल, एरिया हो गया y स्क्वायर. व्हाट इज द विड्थ ऑफ दैट लेयर? इट्स सिंपली 2y. बराबर. व्हाट इज द इनर्शिया? तो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, बराबर ना? व्हाट इज द इनर्शिया? वी ऑलरेडी फाइंड आउट. एंड देन व्हाट इज द y बार? अभी मुझे बताओ, ये ट्रायंगल का y बार कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? y by 3 पे आएगा ना, फ्रॉम बेस. बराबर कि नहीं? अगर इसका सेंट्रोइड मैंने लिया तो ये डिस्टेंस होगा उसका y by 3, और ये हो जाएगा 2y by 3. बराबर है? और ये डिस्टेंस कितना है? d by 2. d by 2. d by 2 मतलब a के टर्म्स में कितना होगा? a by root 2. a by root 2. वेरी गुड. a by root 2. a by root 2 minus 2y by a 3. by root 2 minus 2y by 3. So can I write it is a by root 2 minus 2y by 3? Have you understood it? Yes or no? Yes sir, yes. Okay, so we got this area, we got this b, we got this y bar. Now what to do? Let us find out tau. What is the formula? S a y bar upon I into b. So S as it is, shear shows. Area is how much? Y square. What is y bar? It is a by root 2 minus 2y by 3 upon what is inertia? A raised to 4 by 12. What is b? What is b? 2y. तो एक y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बराबर. ये 2 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 6. तो क्या बचेगा? s, y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ay by root 2 minus 2y square by 3 अपॉन a4. इस 6 को ऊपर लेके जाता हूँ मैं, ये a raised to 4 नीचे. बराबर है? Yes. Yes sir. What next? Differentiation. d tau by dy. You know that for tau to be maximum at dy by sorry, मैं dy पहले क्यों लिखता हूँ पता नहीं. d tau by dy is equal to 0. तो let's say d tau by dy करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6s
by a raised to 4 is as it is. डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, a by root 2 minus 4y by 3, राइट. y स्क्वायर का आता है 2y ना, 3 by 4 root 2 a. क्या हुआ? अच्छा Answer sir, y equals to 3a by 4 root 2. Very good. 4y by 3 and you will get 4y by 3 as a by root 2. तो मुझे y बताओ कितना आएगा? 3a by 4 root 2. 3a by 4 root 2. बराबर है. हाँ, ओके. तो ये कितना डिस्टेंस है 3a by 4 root 2? मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ डेसिमल्स में बताओ कितना है? जीरो पॉइंट फाइव थ्री 0.53 बराबर ना? Yes sir. Yes sir. Okay, we got this. So what will be maximum value? 6s by a raised to 4 into a by root 2 into y का वैल्यू क्या है? 3a by 4 root 2 minus 2 by 3 into y square मतलब कितना हो जाएगा? 9a square बराबर ना, अपॉन 16 into 2 कितना हो जाएगा? 32. करो सिंप्लीफाई इसको. कितना होगा? पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है. ए स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल किया तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा खाली, बराबर. तो अभी इधर कितना बचा? 3 by 8 बराबर ना, माइनस 3 3 दा 2 16 दा 3 by 16, करेक्ट है? सुनो, इट इज 6 by a square into, अभी इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना सिंपली एलसीएम करने के लिए. तो ये नीचे 16 6 minus 3 बराबर. तो ये 2 3 जा 2 8 जा, so it is 9 by 9s a square by 8 by a square बराबर है. Have you understood this? Yes sir. Okay, फाइन. तो इतना तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिला हमें. अभी ये वेरिएशन फाइंड करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू से काम नहीं चलेगा, मुझे ये न्यूट्रल एक्सिस पे कितना आएगा वो भी फाइंड करना पड़ेगा, राइट? So let us now consider another layer CD, which is at this layer. अभी ये लेयर की कुछ y भी लेने की जरूरत नहीं है. अगर मैं वो लेयर लेता हूँ तो मेरा टाउ एट दैट लेयर CD कितना आएगा? डायरेक्टली मैं लिखता हूँ. देखो S एरिया कितना होगा? हाफ इंटू, थोड़ा डायरेक्ट लिखने का ट्राई करो. half into root 2a square. हाफ इंटू बेस इज व्हाट? बेस इज डायमीटर ना, मतलब रूट 2a. हाँ, इंटू d by 2 ना, d by 2 मतलब d by root 2. a by root 2. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कड़ा समझा ना? हाँ, इंटू y बार कितना आएगा इसका? y बार इसका तो आएगा d by root 2 a by root 2 by 3. फिर रिमेंबर a by 3 root 2. सॉरी 3 root 2. 3 थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अभी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए. ओके, अपॉन इनर्शिया तो सेम ही रहता है अपना, a raised to 4 by 12 इंटू b कितना रहेगा? b इज रूट 2a. कितना आएगा ये बताओ? अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. रूट 2a कैंसिल, तो ये a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर बचा खाली. अभी देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ये सब गया. ये नीचे का 12 गया, बचा क्या? Have you understood this? S by a square बराबर ना? हाँ, तो अभी मुझे बताओ, मैं थोड़ा वेरिएशन ड्रॉ करने वाला हूँ. अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा ओवरलैप करूंगा, बट ठीक है, तुम्हें दिखना चाहिए, दिख जाएगा. यहाँ पे तो 0 होगा,
अभी y का वैल्यू देखो कितना आया, जहाँ पे मैक्सिमम है 0.53, मतलब ये हमारा y क्या था, ऊपर से डिस्टेंस लिया हुआ था ना 0.53 a is what this, right, this is a by 2. तो there is somewhere in this layer, यहाँ पे कहीं पे तो मतलब अगर मैं in terms of height की बात करूंगा तो अगर 0.53 a है in terms of d by 2 के टर्म्स में अगर बात किया तो we know that a को मैं d by root 2 लिख सकता हूँ. तो अगर मैं इसको लिखता हूँ d by root 2 तो 0.53 into d by root 2 बराबर. एंड अगर मैं रूट 2 से और मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.7, मतलब समवेयर यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, राइट. तो ये लेयर मैं अज्यूम करता हूँ कि जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो एंड जो मेरा CD लेयर है उस पे तो ये वैल्यू है, राइट. 9/8 मतलब थोड़ा सा ज्यादा. यू कैन सी हियर CD लेयर पे 9/s/a² है और यहाँ पे 9/8 इज ग्रेटर देन 1 ना, तो मतलब ये वैल्यू से ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा रहेगा. ओके, वापस से यहाँ पे ज्यादा एंड देन यहाँ पे कम, तो यू विल गेट द वेरिएशन लाइक दिस. Have you understood this? सर एक और बार बताओ ना सर, एक और बार. देखो मैं बताता हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्यों आया पता चला. y का वैल्यू क्या है देखो, अगर इन टर्म्स ऑफ d देखा तो तुम्हें समवेयर यहाँ पे आएगा, राइट. ठीक है, a के टर्म्स में भी कैलकुलेट करो व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज दिस इज ये लेयर कौन सा है, CD लेयर है. CD लेयर है a by root 2 पे. ठीक है, a by root 2 मतलब होता है 0.707 a, राइट ना. तो ऊपर से अगर मैं मेजर करना चालू करता हूँ तो ये लेयर है 0.707 a पे, लेकिन मेरा मैक्सिमम लेयर कौन सा है 0.53 a पे, मतलब थोड़ा सा ऊपर रहेगा ना 0.28, राइट. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया ये. ओके, एंड वैसे सेम यहाँ पे भी आएगा वो, बिकॉज नीचे भी वही सिमिलर सेक्शन है. तो मैंने हाफ ही सेक्शन सॉल्व किया था, तो ये मुझे पता है कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इधर होगा s/a. ठीक है, देन देयर विल बी मैक्सिमम हियर एंड देन कम. सो दिस इज द वेरिएशन. Have you understood this now? Yes or no? Yes sir, समझा सर. ठीक है, this is how the application should go. Otherwise simple problem symmetric आता है, सब कुछ तो easy पड़ता है, but you should think of use of correct mathematics to solve for the cross sections. Okay? Yes, any doubt in this? No? Yes or no? No sir, no doubt. Okay, so with this we have finished with the this section also, that is the shear stress with transfer sections. So we have solved multiple cross sections. अभी purposefully मैंने एक दो cross section नहीं लिया, for example simple I, because simple I and simple इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. I is symmetric, so I guess you guys can do it. That is why I have not done it. Exam में it can be inverted T, it can be horizontal T, it can be C section, L section, but you know that मैंने एक multiple cross sections किए हैं, तो you know that how to solve for any of the cross section which is given, right? So that is not, I am not wasting our time to do it for each and every type of cross section. I guess you can do it. Okay, is there any doubt you want to ask about this particular chapter? Yes? No sir. No?